So last class में we are looking for this adding redundant association for efficient access. तो हम कर क्या रहे थे, हम डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे थे विद वी आर इन द क्लास डिज़ाइन, और क्लास डिज़ाइन में हमारे पास जो 6 स्टेप थी, दिस इज़ वी आर गोइंग फॉर डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन. सो डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन में हमारा जो मोटो था, हमारा मोटो ये था कि हम सबसे पहले हमारा लॉजिक करेक्ट करें, देन विल स्टार्ट विद द ऑप्टिमाइजेशन. तो उसमें हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी थी, दैट इज प्रोवाइडिंग द एफिशिएंट एक्सेस पाथ, देन we are rearranging our computations for the greater efficiency, and then save our intermediate results to avoid some recomputation. So हमने सबसे पहला जो देखा था, जो देख रहे थे, दिस इज एडिंग redundant association for efficient access. तो इसमें हमने ये देखा था कि लेट्स से हमारे पास ये एम्प्लॉय कंपनी थी, और कंपनी में हमको चेक करना था कि कितने कंपनीज में कितने लोग जो हैं वो जापानीज लैंग्वेज में बात कर पा रहे थे. सो हमने स्किल्स चेक करा था. अब लेट्स से हमारे पास कंपनी में नियर अबाउट 1000 पर्सनस थे, और 1000 पर्सनस के साथ हर किसी के पास ऑन एन एवरेज 10 स्किल्स था. तो हमारा जो इटरेशन चल रहा था, वो इटरेशन नियर अबाउट 10,000 टाइम्स चल रहा था. और मान लीजिए कि अगर हमारे पास 5 ही लोग होंगे जो आपके पास एक्सेस कर रहे हैं, या 10 लोग होंगे, तो हमारा हिट रेशो काफ़ी कम था, और हम इटरेशन काफ़ी कर रहे थे, और हमारे उसमें सक्सेस आ नहीं रहे थे. तो हम क्या कर रहे थे, हम रिडंडेंट एसोसिएशन बना रहे थे. ये आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, बस हमको ये चीज़ें ऐड करके दे रहा था कि हाँ, हमारा जो एक्सेस था वो फास्ट था. तो हम क्या कर सकते थे, एक एसोसिएशन बना दिया दैट स्पीक्स लैंग्वेज. तो स्पीक्स लैंग्वेज में हम सीधा हमने एक डायरेक्टरी या हमने कुछ ऐसा मैपिंग प्रोवाइड करी जिससे हमारे एक्सेस फास्ट हो गया. इंडेक्स इंस्टेड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर क्रिएटिंग इंडेक्सेस फॉर दोज थिंग्स. सो जैसे ही हमारे पास इंडेक्स बनता है, ऑल्दो इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ती है, पर जब इंडेक्स बनता है तो सिर्फ एक ही बार बनता है. तो कंप्यूटेशन कॉस्ट उतना मैटर नहीं करती, क्योंकि हम उसको एक ही बार बना रहे हैं. हमारा जो सब जब मॉडल बन रहा है, फाइन. और जब आप 10 बार 15 बार 25 बार जब कॉल करेंगे, तो आपको वो कंप्यूटेशन कॉस्ट कम लगेगी. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर डिजाइनिंग for one time, and then we'll take results many times. So when we are in creating such indexes here, so हमारे पास कुछ operations थे. So we have to start examining our each operation and see what the association it must traverse to obtain information. Fine. So आप ऑपरेशंस देखेंगे हमको, क्योंकि हम इटरेशन कर रहे हैं और इटरेशन पे किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में आ रहा है, तो हम एक एक ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन हमारे पास मल्टीपल इटरेशन कर रहा है, और क्या हम उसमें क्या इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं. तो हम तीन चीज़ों पे काम करते हैं. उन तीन चीज़ों पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास हम रिडंडेंट एसोसिएशन कैसे ऐड कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एक्सेस, लाइक से हाउ ऑफन योर ऑपरेशन इज कॉल्ड. अगर उसका हिट रेशियो या वो ऑपरेशंस बार बार कॉल हो रहा है, लेट्स से जैसे हम सर्च ही कर रहे हैं और सर्चिंग बार बार हो रही है, तो इट मीन्स दैट कि हमको उस पर कहीं ना कहीं एक रिडंडेंट एसोसिएशन ऐड कर दें, या उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन कर दें, ताकि हम कुछ फास्ट एक्सेस कर पाएँ. देन सेकंड वन इज द फैन आउट. सो what is the fan out along a path through your model. So first we have to estimate the average kind of many association encountered during path. Then we multiply all those individual fan outs to obtain the fan outs of your entire path. That means that first, if you are having multiple association, let's say one to many or many to one, then first calculate or estimate how many this many association encountered in during your operation access path. Fine. Once you identify the number of many association, then we can multiply all individual fan outs, because let's say this is one, and let's say one relationship is one to many. For this example, let's say this is one to many, and then again this many to many. So what we are trying to do this one to many into many into many. So let's say this is 1 to 5, and this is again 110 is to 100. So this is multiplied by your 1 into 10 into 100. So this is 10 into 100. So this is how we can calculate or estimate our fan outs for your
particular path. So जब हमारे पास फैन आउट ज़्यादा आ रहा है तो वी कैन से दैट ईच पर्टिकुलर ऑपरेशन इज सपोज टू बी some specialized association or redundant association needed to lower down the computational cost. Then the third one is the selectivity. So we have to again estimate what is the fraction of hits on your final classes, because we are going to select in particular operation. So what are the particular fraction of hits on your final classes? That is the object that meet a certain selection criteria and different operations that we are using. So if we are going for traversal and if the traversal rejects most of the objects, then we need a simple nested loop for finding all those target objects. So what we are trying to do is that we should create some indexes for this frequent operations that have some low hit ratio, because such operations are supposed to be inefficient when we are using the nested loops to traverse your path in your entire networks. Fine. So कहने का मतलब ये है कि आपका जिसकी एक्सेस ज़्यादा हो रही है, जिसमें फैन आउट्स ज़्यादा आ रहा है, मतलब उसके पर्टिकुलर पाथ में फैन आउट ज़्यादा आ रहा है, या हमारे पास हिट रेशियो उसका कम हो रहा है, तो हम उन केसेस में रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं. सो फॉर दोस इंडेक्सेस वी शुड गो फॉर redundant association for your efficient access or lower down the computational cost for your system. Fine. Then the second thing for your design optimization is that we should rearrange the execution order of our efficiency. It means that first, after we are adjusting the structure of our class model to optimize our frequent traversal, then we can optimize our algorithm itself. Why? क्योंकि हमने हमारी एल्गोरिथम्स, हमने ऑपरेशंस आइडेंटिफाई कर ली. ऑपरेशंस हमारे पास देख लिया कि कौन फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, किसका पर्टिकुलर पाथ में फैन आउट ज़्यादा आ रहा है, किसकी हिट रेशियो कम है, तो उनके लिए हमने रिडंडेंट एसोसिएशन ऐड. After adjusting all those structure in our class model, what we are trying to do is that we like to optimize our algorithm. Fine. So the one key to algorithm for your algorithm optimization is to eliminate the dead paths as early as possible, because ये जो डेड पाथ्स हैं वो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, या आपके पास कंप्यूटेशनल कॉस्ट या आपके कॉस्ट कोड ऑप्टिमाइजेशन में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे. लेट्स से हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सपोज दैट इस कॉलेज को मान लें. सो सपोज वी आर क्रिएटिंग सम एप्लीकेशन दैट फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हु स्पीक्स बोथ अगेन हिंदी एंड इंग्लिश. फाइन. सो सपोज हमारे पास 5 एम्प्लॉई हैं जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं जो हिंदी बोल पा रहे हैं. सो इट इज़ बेटर टू टेस्ट एंड फाइंड जो इंग्लिश बोल सकते हैं ना, उनको हम पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि 100 हैं तो 100 तो हम निकालते रहेंगे. देन वी कैन गो फॉर all those employees who are speaking Hindi. Fine. So in general what we are trying to do is that we pay some जो हमारे पास थोड़ा सा जिसका हिट रेशियो कम है, जिसकी सर्चिंग की प्रोबेबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी कम है, हम उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं. जैसे हम यूजुअली इंडेक्सेस बनाते भी हैं, हम एग्जैक्टली क्योंकि हम इंडेक्सेस ही बना रहे हैं, तो इस इंडेक्सेस में हम लेट्स से हम जब टेक्स्ट माइनिंग पे काम करते हैं तो हम किसी डॉक्यूमेंट का हम इंडेक्स बनाते हैं, तो हम उसमें टर्म फ्रीक्वेंसी तो इंक्लूड करते ही हैं. इन एडिशन टू दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड इज दैट इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर भी हम उसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी पर ही काम कर रहे हैं. लेट्स से व्हेन अगर आपके पास इस
SVV में एम्प्लॉयज़ हैं, लेट्स से सभी हिंदी बोलते हैं, तो हम मान लीजिए कि कुछ एम्प्लॉयज़ निकाल रहे हैं, दोज हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड दोज हु कैन अगेन स्पीक लाइक, और कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, फाइन, अगेन यस जापानीज, फाइन। सो हमारे पास हिंदी स्पीकिंग तो खैर सब हैं ही, तो हमको उनको सर्च करने की जरूरत नहीं। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी पर्सन्स आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड हाउ मेनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयज स्पीकिंग जापानीज। तो हमने आइडेंटिफाई करा कि 100 पर्सन्स जो थे वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, एंड देन ओनली 5 पर्सन्स आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग योर जापानीज लैंग्वेज। सो आर एल्गोरिथम कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे पास जो रेयर है, हम उस रेयर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर ऑप्टिमाइजेशन, लाइक सो दिस इज इम्पोर्टेंट की, क्योंकि जो रेयर है उस रेयर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। देन वी कैन सैंपल आउट ऑल दोस डेटा राइट फ्रॉम योर लेट्स से 100 पीपल्स आर स्पीकिंग इंग्लिश, सो दिस आर जस्ट फ्रीक्वेंट केसेस। तो उन फ्रीक्वेंट केसेस पर एल्गोरिथम फोकस नहीं करें जो रेयर है, क्योंकि रेयर को आइडेंटिफाई करने में इटरेशंस ज़्यादा लगेंगे। हमको पहला एम्प्लॉय भी मिल गया इंग्लिश स्पीकिंग वाला तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, पर हमको जब वो जापानीज बोलने वाला पहला एम्प्लॉय मिलने में हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है हम जब सिक्वेंशियल सर्च कर रहे हैं तो सिक्वेंशियल सर्च में वो जापानीज बोलने वाला सबसे आखिरी में बैठे रहे, और एज यूजुअल हमारे पास जापानीज का कोई काम भी नहीं है, तो हम वो हो सकता है डेड पूल में रहें और उस डेड पूल से हमको उठाना। सो आवर फोकस इज दैट वी शुड गो फॉर समथिंग लाइक दोज आर मोर रेयर than identifying the frequent items. Fine. So this is your rearranging execution order for your efficiency. So this is how we can optimize our algorithms in such a way. Now, the next thing, or for the design optimization, the third term is that we should save our derived values to avoid our recomputation. Fine. So again हमारे पास recomputation भी एक important चीज है. So sometimes it is very helpful for us to define new classes to cache our derived attributes and avoid the recomputation. Why? Because recomputation again takes lots of computational cost, and so what we are trying to do is that we must update our cache, and if any objects uh, which are dependent on somebody, so we have to update all these uh, things. So we are focusing again on updates, because अगर ऑब्जेक्ट हमारा अपडेट नहीं हुआ है तो हम उस पर रिकम्प्यूटेशन कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको रिकम्प्यूटेशन कॉस्ट कहाँ करना है? जब आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपडेट हुआ है, उसकी स्टेट चेंज हुई है। अगर स्टेट चेंज नहीं हुई है तो हम नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? हमको इम्पोर्टेंट है कि हमको अपडेट्स आइडेंटिफाई करनी है। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू हैंडल आवर अपडेट्स। सो फर्स्ट इज दैट वी शुड explicitly update, or we should find some explicit updates. So what we must do is that as a designer we should insert some code into some update operations to find whether there are some explicit updates are available or not, or we are going from some derived attributes and some updates working on your particular objects, and then and some derived or dependent, or some derived attributes depends on that particular object. So if your particular object is updated, then your derived attributes must be updated. So we should have some codes that should check whether this update works or not, or there should be some explicit update for a particular object on which some your derived attributes or your attributes depends on. So we have to identify all those explicit updates, like example लेके चले, हम सेशन बना रहे हैं अगेन, जो सॉरी वेब एप्लीकेशंस में हम सेशंस बना रहे हैं, तो उन सेशंस में हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एक सेशन ऑब्जेक्ट होता है, उस सेशन ऑब्जेक्ट्स पर हमारे बहुत सारी चीज़ें बनती है कि हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं तो अगेन हम यूज़र आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपका कोई लॉग आउट होकर वापस लॉग इन हो गया है तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट था, जैसे मैं जीमेल पे लॉग इन करता हूँ और
उसी टाइम पे कोई दूसरा बंदा फिर जीमेल पे लॉगिन कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास हम दूसरे टैब में भी अगर जीमेल खोलते हैं तो हमारा सेम एट्रीब्यूट ही आता है। तो अब हमको उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे या हमको उस सेशन ऑब्जेक्ट्स पे अपडेट करना है। अब सेशन ऑब्जेक्ट हमने, मान लीजिए कि मैंने लॉग आउट कर दिया और दूसरा बंदा उसमें लॉगिन आया, अब मैंने रिट्राइव करा कि मेरा मेल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वी शुड इंसर्ट सम कोड to identify whether there is some explicit update on your session objects or not. So this is how we can avoid some recomputation, because अगर हमारे पास लॉग्ड इन पहले से ही पड़ा हुआ है तो हम बार बार उसको लॉगिन वाली फैसिलिटी पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन पे काम करेंगे इट मीन्स कि आपको वापस एक लॉगिन पेज अपलोड करना है, देन आपको फिर डेटाबेस से रिट्राइव करना है इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन आइदर इट इज़ इंडेक्स और इट इज़ बेस्ड ऑन योर लीनियर अरे, सो कंप्यूटेशन कॉस्ट लगती है। फाइन, देन second thing is that we should go for periodical recomputation. Fine. So जैसे हमारे पास विंडोज़ की अपडेट्स आती हैं, तो विंडोज़ की अपडेट ऐसा नहीं आता कि एक छोटा सा कोड आता है तो आपके पास अपडेट आती है, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट तक की अपडेट आएगी, देन हम उसको अपडेट करेंगे। एक एक अपडेट, छोटी छोटी अपडेट्स को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आर एप्लीकेशन ऑफन अपडेट्स आर वैल्यूज इन सम बंचेस, so we could recompute all the derived attributes periodically instead of our let's say some source changes occur in your system. So एक छोटा सा भी चेंज हुआ है तो हम पूरा रिकम्प्यूटेशन नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे some periodical changes इस particular changes पर, because this periodical recomputation supposed to be the simpler and it takes less computational cost than your explicit updates, and this periodical recomputation is again supposed to be the less prone to our bugs. Fine. So when we are having some this recomputation as an periodical, so computation cost कम आ रही है हमारे पास, bugs के chances कम हो रहे हैं, so and it is supposed to be the simpler, क्योंकि हमको बार बार हमारे objects update करने पड़ रहे हैं। But अब हम बोलते हैं कि let's say when we are going from some incremental changes, or if you are having data that is that changes incrementally, so हमको बहुत छोटे या बहुत थोड़े से ऑब्जेक्ट्स में चेंज करना पड़ेगा, हमको फुल रिकम्प्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब फुल रिकम्प्यूटेशन करते हैं, जब पीरियडिकल रिकम्प्यूटेशन करते हैं तो हमको फुल रिकम्प्यूटेशन करना है, पर जब हम इंक्रीमेंटल अपडेट करते हैं तो या इंक्रीमेंटल अपडेट कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा रिकम्प्यूटेशन नहीं लग रहा है। इट मीन्स दैट जब हम इंक्रीमेंटल पे काम करेंगे तो हमारे पास रिकम्प्यूटेशन की कॉस्ट उतनी नहीं आएगी, पर जब हम पीरियडिकल रिकम्प्यूटेशन पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास एरर होने की चांसेस कम है। अब आप ये चेक करें कि हम किस ट्रेड ऑफ पे बैठ के हम हमारी डिज़ाइंस पर काम कर सकते हैं। देन थर्ड इज दैट वी हैव टू लुक फॉर दिस एक्टिव वैल्यू। सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस एक्टिव वैल्यू, सो दिस एक्टिव वैल्यू is a value that automatically kept consistent with its source values. Fine. So we need some special registration mechanism to record the dependency between your derived attributes on your particular source attributes or source objects. So for that mechanism we have to monitor the values of our source attributes, and we should look for the updates for the source attributes, and if your source attributes is updated, then it should be reflected in your derived attributes when there is some change in your source attribute. So some programming language like Java provides your active values, so that if there is a change in between your source attributes, so this source attributes can be reflected on your derived attributes, and this is how we can go for design optimization. Then the next topic is the reification of our behavior. So I'm just moving to all those things. So till now, any problem? No, sir. No, sir. Okay. So then we are going from the reification of behavior. This reification is just related to term reify.
So this refi, it means that we are going from abstract to the concreteness, or we are going from abstract to the real world value. So what we are trying to do is that we are providing all the uh, definitions or the real values for some abstract design that is being available in your analysis phases and in your design sorry, in your system design. So the different behaviors usually written in our code are supposed to be the rigid. We can execute it, but we cannot manipulate all those things at a runtime. And it is supposed to be good, because when you like to change the behavior of your program on the runtime, so it may cause some problems. But if you want to need to store, or if I like to pass, or if I like to change the behavior at a runtime, then we should refi it. So what is the reification? So the reification is the is just like the promotion of something that is not an object into your object. So usually your behavior meets all this description. So I am just promoting our uh, operations into your objects. So what is the refi? I am just providing the to your particular abstract values. Fine. So, and when we are going from this reification, it is not as usual as that we are updating or we are promoting something. But if we like to refi a behavior, like in some operation, so what we can do is that we can store it, then we can pass it to the other operations, and then we'll go for the transformation. So reification adds some complexity, but yeah, it can support the scalability, the flexibility, this expansion of your particular system. So when you are in operations and all those operations are converted to your particular objects, it means that you are providing some uh, flexibility or the scalability to your system. So if we like to refi our system, so we refi our behavior by encoding it into objects and then again decoding it when it is going to run. Fine. So sometimes we are having some runtime cost associated with this encoding into our object and again decoding when it is running. So some computational cost is associated with this encoding and decoding, but this is not as significant as it may occur some high computational cost, but it is just an uh, under some threshold level, so we can go for our reification. So if we like to refi the entire behavior, so your entire behavior is encoded into a different language, then it must be interpreted. Then what we're trying to do is that we like to slow down or lower down the magnitude for direct execution. So what we are trying to do is that we are like to uh, encode our whole behavior, and if we like to change it into another language, so what we are trying to do is that we are just moving towards like one operation is encoded into some objects, and then all those objects are being run on, and uh, all those operations are executing, and if we like to add something, then we can add all those things into all these things. So let's say we are having the list of behavioral patterns are available for this reification of our behavior. So it may include like some state machines like tables with your runtime interpreter. Let's say we are having some states, and then we can encode all those sequence of your
operations into some parameterized commands. Let's say these are again commands. Then again we are parameterizing our procedure in terms of our operations. So it means that we are going from a strategy. So we are having some states, we are having some commands, and we are having some strategy. So what we are trying to do is that we like to refine or reification of our particular behavior into some state or into some commands, or like you are having some strategy. So these are different patterns for reification that is being available for us. Then after the reification, we have to look for the hierarchy of our classes. So we have to adjust all the hierarchy of our classes. So for this particular hierarchy, we should look for this inheritance, and then we have to adjust all inheritance. So we can often adjust the definition of classes and the operation to increase the inheritance by performing all those steps. Like we can rearrange our classes and operation to increase inheritance. Then we can add some abstract behavior out of some group of classes, or we can use delegation to share behavior when inheritance is semantically invalid. Again, we are moving for this aiding inheritance in our system. So can anyone tell me what is the disadvantage of inheritance in our object oriented programming? What is the disadvantage of this inheritance? Anyone can answer me? I'm just waiting. तो Anyone? एक बहुत बेसिक सा डिसएडवांटेज हो सकता है कि जो इनहेरिट करती है जो क्लास किसी पेरेंट क्लास को, तो वो लिमिटेड हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। उसका पर्टिकुलर डिसएडवांटेज ये होता है, अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस में हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ऑपरेशन चाहिए होता है और हम उससे सारी चीज़ें ले लेते हैं। लेट्स से जैसे हम बात करते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से कुछ चीज़ें इनहेरिट कर रहे हैं, तो इनहेरिट में हम उनका पैसा ले रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। हम उनके एसेट्स ले रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। पर हमारे साथ हम उनके साथ वो जीन से हमारे पास जो जेनेटिक डिसीजेस होती हैं वो भी हमारे पास आ जाती हैं, जो अनअवॉइडेबल होती है। हाँ, तो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है, वो एक्स्ट्रा चीज़ों को हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो जब हम वो एक्स्ट्रा चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर डेलीगेशन यूज़ करते हैं। तो दिस इज आवर डेलीगेशन। सो एक एडवांटेज तो हमारे पास ये आ रहा है कि दैट वी आर गोइंग फॉर रीयूजिंग ऑल दोज थिंग्स, बट डिसएडवांटेज इनहेरिटेंस में आ रहा है कि हमारे पास अनवांटेड चीज़ें भी आ रही हैं। सो लेट्स से वी आर गोइंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर क्लासेस, सो वी कैन एडजस्ट द लेवल ऑफ inheritance. So what we can do is that we adjust the definition of classes and then some operation to increase the inheritance, and these are three different steps for adjustment of inheritance. So आज हम पहले ही बात करेंगे, बाकी the remaining two I will include in the next classes. So when we are going for this rearranging our classes and operations, so sometimes several classes defines the same operation. Just a minute, I'm having some call. Fine. So sometimes several classes define the same operation, and that can easily be inherit from your common ancestor. Like हमारे पास एक method है, like student can breathe and a teacher can breathe. So instead what we can do is that performing same type of operation. So what we can do is that we can create a new class like human, and all those student and the faculty can inherit these classes and can add some operations right from those classes. So this is how we can adjust inheritance. But when we are going like let's say हम breathe की बात कर रहे हैं, तो in different senses like student and like in फैकल्टी, जैसे पोस्ट कोविड के बाद अगर हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो स्टूडेंट कैन ब्रीथ एंड फैकल्टी कैन ब्रीथ। तो स्टूडेंट कैन ब्रीथ, तो स्टूडेंट अगर क्लास में आएगा भी तो हमको उसको मास्क लगाना ही है। इवन
अगर पॉसिबल है तो हम अगर जनवरी से क्लासेस रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर पाएँ, तो इट इज़ अगेन दैट स्टूडेंट शुड कम विथ मास्क while when faculty is delivering his lecture, so he should avoid mask while taking his lecture. So वहाँ पर फिर breathing के operations कुछ अलग अलग आ रहे हैं. So although we can say that we are having same type of operation, again I'm saying that we are having same type of operation, then we can easily inherit it from the common ancestor. But more often the operations that are in your different classes are look like similar, but these operations are not identical at all. Fine. So what we can do is that we should adjust the definition of all these operations, and then we are able to cover all those operations in a single inheritance operations or inheritance structures. So before using this inheritance, uh, we should focus on that these operations must match, and this operation should be similar in all the contexts and all in all these classes. So all operations that must have the same signature, that is the same number of arguments and the same type of result it is returning to the calling objects. In addition to that, what we can do is that our operation must have same type of semantics. Again, semantics is an important thing, because when we are creating a classes in our object orientation, this semantics is more important. So what we can do is that we can have some different kinds of adjustment to increase the chance of inheritance. Like we have some operations with the optional arguments. So जैसे हम पाइथन में यूज करते हैं ना, लेट्स से स्टार करके हम अननेम्ड पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम डबल स्टार करके lists provide कर सकते हैं. So what we can do is that we have some operations that have some optional arguments. So what we try to do is that we may be able to align the signatures by adding the optional arguments, and that can be ignored. So this is one way. Then what we are trying to do is the second type of operation is that the operations that are special cases. Like some operations may have fewer arguments because they are a special case of some general operations. So like again I'm just going to Python. Like I like to append an element in particular list. So this is a special case of inserting an element into your list. So your insertion point simply is your लास्ट एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं. तो हम इंसर्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम जस्ट स्लाइसिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, हम लाइक पर्टिकुलर पोजीशन पे भी ऐड कर सकते हैं. और व्हेन वी आर ट्राइंग टू अपेंड ऑल दिस, सो इट मींस दैट वी आर inserting this particular item in the end of our list. So this is how we can go for uh, we can identify all those operations and their particular special cases. Fine. Then we can have some inconsistent names available. So what are these inconsistent names? So we are having some similar attributes in our different classes. So we are having similar attributes and that may have different names. Like again example, like somebody calls it like as an student class, someone calls it as a registration number, somebody calls it the enrollment number, somebody calls it as a roll number, and so on. So these are supposed to be the primary key. So we are having similar types of attributes and different classes, and they may have different names associated with these classes. So what we can do is that we can rename all these attributes with the same name, or we can move them to an common ancestor classes with the same name. Then when we are in some operations, then this operation can access all those attributes because they are having the same name, and this is this it provides some ease of use in your computation or even in your coding.
also what we can do is that we can also watch all those operations that are having similar functionality, but those are having different names. So what we can do is that we can have some consistent naming strategy. So for this design optimization, we'll go for an consistent naming strategy for an for your operations and for your attributes. Fine. Then finding the irrelevant operations. So several classes in your group may define some operations, and some classes do not define all those operations. But जैसे 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 हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास में हमने 3 ऑपरेशंस बनाए थे, दूसरी क्लास में हमने 4 ऑपरेशंस बनाए, और जब वो और इट लुक्स लाइक सिमिलर, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें उन सभी को हमारे जब कॉमन एंसेस्टर में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑपरेशंस जो दूसरे क्लासेस या दूसरे डोमेन के लिए इररिलेवेंट होते हैं, तो वो भी हमारे एंसेस्टर क्लास में चले जाते हैं। तो उन एंसेस्टर क्लास में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो दूसरे डोमेन में इररिलेवेंट है, तो उसको हम हायरार्की में ऊपर जाने की बजाय उसको हायरार्की में नीचे लेके आ सकते हैं। लाइक हमारे पास एक शेप क्लास है। शेप क्लास हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास शेप होता है, तो शेप में हम एक डेफिनेशन होती है, या हम 2 एग्जांपल लेके चलें। लेट्स से स्टार्ट कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक हमारे पास सर्कल है। फाइन। सो रेक्टेंगल और सर्कल में हमारे पास मेथड्स हो सकती थी, लाइक ड्रॉ फिगर। सो दोनों ड्रॉ फिगर कर सकते थे। देन वी कैन हैव कैलकुलेट द एरिया, फिल द सर्कल एंड सो ऑन। सो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। then in addition to that what we can do is that हम फिगर को रोटेट भी कर सकते हैं, तो ये भी एक शेप क्लासेस में है। तो हम शेप डिफाइन कर रहे हैं, तो क्योंकि ये दोनों कॉमन प्रॉपर्टीज है, दोनों कॉमन क्लासेस में जा रही हैं, तो एक प्रॉपर्टी क्या हो सकती थी, ड्रॉ फिगर, फिल कलर्स, फिल बाउंड्रीज, व्हाट आर बाउंड्रीज वेट। तो ये सारी चीजें हमारे रेक्टेंगल में और सर्कल में नहीं ले जाते हुए हम इसको कॉमन प्रॉपर्टीज है, तो हम इसको शेप में लेके जाते हैं। अब हमारे पास एक फीचर और आता है कि रोटेट। अब रोटेट, दिस इज वेरी गुड, है ना। हमारे पास सर्कल आ रहा है, हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, हम इन दोनों को रोटेट कर सकते हैं। बट जब हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है, हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, हम उन दोनों को रोटेट कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर लाइक दिस सर्कल, उस सर्कल को हम रोटेट करेंगे तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं, क्योंकि हाँ ये खत्म होगा तो ये फर्स्ट वाला ज्वाइन कर लेना, ये 12 बजे से जो है, ये वाला मत करना, आईओटी वाला मत करना, ये वाला करना। जब ये खत्म हो जाए फर्स्ट वाला, ठीक है, एनजीटीजी जो लिखा है, ओके, थैंक यू। और वो भी खत्म हो जाए तो कि आएगा लास्ट। Fine. So this is how we can go for finding the irrelevant operations, and so we have to look for all those irrelevant operations over there. Fine. और बाकी IoT वाले क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करना सर? बेचारे ज्वाइन कर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा कि सर डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी तो सेम ही चीज होगी। मैं कुछ वॉइड मेथड्स लूंगा जिनको पेरेंट क्लास में डिक्लेयर कर दूंगा, और उनकी जो बॉडी रहेगी वो चाइल्ड क्लास में जो इनहेरिट करेगी वहां